Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biologycolony. In this video, we're going to discuss about dbtbet JRF 2024. So Department of Biotechnology and NTA have released the online applications for Graduate Aptitude Test Biotechnology, that is GAT-B, and Biotechnology Eligibility Test, that is BET 2024. So GAT-B is the Graduate Aptitude Test for admission into PG programs in biotechnology and allied areas. And DBT-JRF is for pursuing research in frontier areas of biotechnology. So these are the following details. The duration of online registration and submission of online application form is from 8th of February to 6th March 2024. And the date of examination is declared to be 20th April 2024. Also, it will be of 3 hours. GAT B will take place in morning session, that is 9 a.m. to 12 p.m., while BET in afternoon session, that is 3 p.m. to 6 p.m. The mode of examination will be CBT mode, and the mode of question paper or medium will be English. The fees for the same will be 2400 if both exams are selected, and GAT B and BET each have 1200 fees for general, and SC ST PWD have half of the amount. So candidates can apply into both the programs or in only one. And the eligibility for BET 2024 is bachelor's and master's, that is BTech, MBBS, BE, or master's in, that is MSc, MTech, MVSc, MPharma, integrated MSc, MTech in any discipline of biotechnology, life sciences such as biomedical, bioinformatics, biochemistry, biophysics, botany, chemistry, computational biology, genetics, microbiology, zoology, or any other allied areas of biology/life sciences. और कैंडिडेट्स जो कि MSc, MTech, MVSc, MSc एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स में हैं एंड वो PG ग्रेजुएट टीचिंग प्रोग्राम में है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल. एंड कैंडिडेट्स जो कि फाइनल सेमेस्टर ऑफ दियर एग्जामिनेशन में है या अवेटिंग रिजल्ट है, उनका रिजल्ट अवेटेड है, सो दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई. और minimum 60% of marks for general, EWS and OBC category, and 55% of marks for SC ST differently abled candidates in aggregate or equivalent grade. Age limit up to 28 years of age on the last date of application for general and EWS category, while age relaxation 5 years का दे रखा है SC ST और differently abled के लिए and women candidates, and up to 3 years for OBC non-creamy layer candidates. So candidates should be a bona fide citizen and resident of India. Also, the candidates who has either appeared or is due to appear in the final examination of their qualifying degree, and they can also apply to BET 2024 but under the result awaited category. इसमें आपको अंडरटेकिंग या अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट करना होगा विद द स्टैम्प विद ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट. The mode of examination will be computer based test and pattern will be as follows. इसमें दो सेक्शन है, that is section A which includes general science, mathematics, chemistry, general aptitude, analytical and quantitative ability, and general biotechnology. And this section A contains 50 questions and you have to attempt 50 questions only, and it carries 3 marks each. सेक्शन बी में स्पेसिफिक एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से आएंगे और ये 150 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको कोई से भी 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, एंड दे आल्सो कंटेन 3 मार्क्स ईच. सो टोटल हो रहा है हमारे पास 300 मार्क्स का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्किंग स्कीम. दैट इज सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस है, हमने डिस्कस किया, ये 3 मार्क्स ईच है, एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, एंड फॉर ईच इनकरेक्ट रेस्पॉन्स 1 mark will be deducted from the total marks, and unanswered or unattempted questions will be given 0 marks. While in section B हमको 150 questions में से attempt करना होगा of specific areas of biotechnology, and the candidate has to attempt 50 questions and each question carries 3 marks and there will be negative marking. And in case अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है तो फिर उन्हीं को मार्क्स दिए जाएंगे जो कि उन्होंने सेलेक्ट किया है करेक्ट आंसर, कोई सा भी एक. एंड अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है और क्वेश्चन गलत माना जाता है तो वो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा एंड फुल मार्क्स विल बी गिवन टू द वन
attempted this question. So let's discuss about the syllabus. The question paper will have two parts, part A and part B. And then इसमें जो part A है 50 क्वेश्चंस करने होंगे, part B में भी 150 में से 50 क्वेश्चंस करने होंगे. So part A consists of aptitude and general biotechnology. Aptitude में क्या क्या आएगा, comprehensions आ सकते हैं, that is the written paragraphs आ सकते हैं जो कि आपको उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. And then there will be quantitative type questions designed to test the students' ability to comprehend large numbers and do simple calculations. रीजनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं. देन वी हैव जनरल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि पहला यूनिट आप देख सकते हैं बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है. दिस इज बेसिकली बायोकेमिस्ट्री. अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं या DBT की ही कर रहे हैं तो आपको ये सब पता होगा. देन वी हैव मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी दैट कंसिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड अदर टेक्निक्स एंड टूल्स दैट आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एंड देन वी हैव organization of structure and function, that is the cell biology and molecular biology along with the cancer biology and immunology and also the cell signaling. तो ये सारे जो हैं CSIR के पार्ट है, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 2. देन वी हैव RDT, दैट इज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सिलेबस, DNA सीक्वेंसिंग मेथड्स, RAPD, RFLP, ये सब. देन वी हैव जेनेटिक्स, देन वी हैव जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स. अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ी है आपने तो आपको ये आएगा, मास्टर्स में पढ़ी हो या बैचलर्स में पढ़ी हो. Then we have IPR and biosafety and bioethics. Then we have part B. This consists of special branches in biotechnology. इसमें क्या है, बेसिकली पूरा जो है ये बायोटेक्नोलॉजी को ही स्पेशलाइजेशन है. एंड ज़रूरी नहीं है आपको इसके सारे क्वेश्चंस आए, इसीलिए 50 क्वेश्चंस करने हैं तो आप फिर भी उसमें से सेलेक्ट करके कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कॉमन सी है पार्ट ए एंड पार्ट बी में. तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट है, टिश्यू कल्चर है. देन वी है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी भी है. एंड वी ऑल्सो हैव न्यूरो साइंस. ठीक है, ये सारे जो हैं आपको अगर आते हैं, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सेलेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हैं इसमें से. Thanks for watching this video. If you like this video, subscribe to my YouTube channel Biology Colony and do check out my Telegram channel also. Bye.